According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. Ayurvedic treatment rests on three powerful pillars: Daivavyapashraya, Yuktivyapashraya, and Sattvavajaya. I try to combine all three of these approaches for the treatment of children suffering from autism. Sattvavajaya Chikitsa is a form of treatment that includes modern-day psychotherapy with it. Being a D.Litt scholar with PhD in role of Ayurvedic herbs in psychological disorders, as well as a dedicated researcher, it has been comparatively easier for me to apply Ayurvedic Sattvavajaya Chikitsa in integration with Yuktivyapashraya Chikitsa with greater precision and effectiveness. This combined approach has been consistently used by us in the management of children suffering from autism. In addition, selected aspects of Deva Vyapashraya Chikitsa have also been incorporated wherever appropriate. I would now like to present one case study to begin with. This is the case study of a 3-year-old child diagnosed with autism. At a very young age, Parth showed multiple developmental challenges. Chief complaints: speech delay, hyperactivity, irritative behavior, less interaction, poor understanding. Parth's detailed medical history was documented and evaluated before initiating treatment. In July 2023, Parth's parents consulted Dr. Navdeep Sharma and felt confident about the scope of treatment. Following the comprehensive assessment, Parth was recommended the medicine's prescription Braino R dose, 10 ml in afternoon, 20 ml at night. Braino R contains these Ayurvedic herbs: Mandukparni, Kushmand, Ashwagandha, Amlaki, Jatamansi, Sarpagandha, and Ustupurus. Braino A dose, 30 ml in the morning. Braino A contains these Ayurvedic herbs: Shankpushpi, Brahmi, Shatavari, Bringraj, Shunti, and Vacha. Pumpkin seeds oil dose, 8 drops in the morning, 8 drops in the evening. Contains Ayurvedic herb ingredient pumpkin seeds. Mukta Pishti dose, 125 milligrams in the morning, empty stomach. Contains marine pearls. At the initial assessments, Parth's hyperactivity was 3 out of 5. There was reduction in hyperactivity before second consultation with rating at 2 out of 5. Color karo, very good Parth, color karo. No, इस हैंड से करते हैं, इस हैंड से, राइट हैंड, वेरी गुड. चलो कलर करो. At the start of treatment, Parth's speech was rated 1 out of 5. There was improvement before the second consultation, with the rating rising to 2 out of 5. बस. हो गया. Initially, command following was deficient with a rating of 1 out of 5. Prior to the second consultation, improvement was noted with a rating of 4 out of 5. Very good, cow. Very good. Initially, eye contact was rated 3 out of 5. Before the second consultation, his eye contact improved to a rating of 5 out of 5. उसका वीडियो बनाओ तो वो लड़का और भड़कता है एकदम से. पार्थ, खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो? हाँ? पार्थ, आपको क्या खाना है? क्या खाना है? At the beginning of treatment, Parth exhibited verbal stimming, visual sensory concerns, and hand flapping, with a rating of 4 out of 5. Prior to the second consultation, there was a reduction in his sensory concerns, with the rating dropping to 2 out of 5. Before second consultation, A2 examination was done where we evaluated the progress. Following is the medical comparative history of Parth. After 6 months, I added Sarswata Rishtam with gold, 5 milliliters morning after food. All previous medicines continued in the same doses. From July to January, a total of 20 ABA sessions were completed with psychologist Mr. Rahul. Before treatment, Parth often showed irritative behavior and did not respond clearly to instructions. करो. और बाहर बिलो करो, बाहर करो, ऐसे करो, ऐसे. हाँ, बाहर. हाँ. चलो आ जाएगा वो. Within 9 months of undergoing treatment from Dr. Navdeep Sharma, Parth showed significant improvement. Very good. इसके अंदर रख दो. Very good. पापा का हैंड, दीदी का हैंड करो. Very good Parth. चलो. Very good. खाओ. Very good. Parth तो बहुत. हेलो पेरेंट्स. पार्थ हेलो करो.
हेलो करो। ये पार्थ है मेरा बेटा, 4 साल का होने वाला है। लास्ट ईयर जुलाई में हम डॉक्टर नवदीप शर्मा सर के यहाँ पहुँचे थे। हमें एक सर ने मेरे बताया था सर के बारे में। हमने सोचा भी नहीं था कि आज 9 महीने में पार्थ मम्मा पापा हमसे बोलेगा इतनी जल्दी। हम तो मतलब बड़ा एक माँ पेरेंट्स के लिए कहता है कि कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुँह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी खुशियाँ दी, पापा हमसे बोलेगा इतनी जल्दी। हम तो मतलब बड़ा एक माँ पेरेंट्स के लिए कहता है कि कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुँह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुँह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी खुशियाँ दी हैं, बहुत एक पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा इतनी जल्दी और इतना अच्छा है। की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले ही स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। A very warm welcome to all of you in this live interactive session of ours, where we generally try to take the maximum of your questions. And while taking your questions, we also discuss some important Ayurvedic aspects with you. नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में, जहां आपके साथ कुछ बढ़िया आयुर्वेद की सिद्धांतों पे बात करने के साथ साथ हमारा ये प्रयास रहता है कि कुछ अच्छी आयुर्वेदिक बातों के साथ साथ आपसे आपके क्वेश्चंस, उनका जवाब जरूर दिया जाए, मिस नहीं किया जाए। आज भी कोशिश यही रहेगी कि आपके क्वेश्चंस हमारी प्रायोरिटी रहें और अपने क्वेश्चंस आप जैसे जैसे डालते जाएंगे, हाँ डेफिनेटली हमारी प्रायोरिटी हमारे मेंबर्स के क्वेश्चंस की रहेगी, क्योंकि जैसा कि अक्सर आपके कोऑर्डिनेटर्स आपसे बात करते होंगे कि सही आयुर्वेद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ही हम अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। और हर बुधवार मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके साथ, आपके समक्ष होकर के आयुर्वेद की कुछ बातें करके सही आयुर्वेद का प्रचार आपकी मदद से पूरी दुनिया में किया जा सके। तो जो मेंबर्स हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं, उनकी इस मदद से हम अपने इस चैनल को पूरी दुनिया तक और प्रमोट कर पाते हैं। यही कारण है कि हमारी प्रायोरिटी हमारे मेंबर्स के क्वेश्चंस की रहती है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, टुडेज टॉपिक हाइपर एक्टिविटी। अक्सर जब हम बच्चों की बात करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं, तो पेरेंट्स उन बच्चों के केस में हमें बच्चा हाइपर एक्टिव है ये बताते हैं। एक जगह टिकता नहीं है बच्चा, इधर से उधर दौड़ता है बच्चा, कुछ सिखाने लगो तो एक पर्टिकुलर काम नहीं कर पाता है बच्चा। एग्रेशन अलग चीज है, हाइपर एक्टिविटी अलग चीज है। बहुत बार हम लोग एग्रेशन और हाइपर एक्टिविटी को मिक्स भी कर जाते हैं। जब बात हम हाइपर एक्टिविटी की करते हैं, तो हमें यहां ये ध्यान रखना है कि हाइपर एक्टिविटी इज नॉट एग्रेशन। हाइपर एक्टिविटी में, क्योंकि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन कम है, वो एक समय पे बहुत से काम करने की कोशिश कर रहा है, यही कारण है कि एक हाइपर एक्टिव बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तवज्जो नहीं दे पाएगा। यही कारण है कि जब हमें एक बच्चे को बुलवाना है, सिखाना है, तो बहुत जरूरी हो जाता है उस बच्चे की उस हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाना। उसी लिए ही कुछ खास तरह की हर्ब्स जो हमने ब्रेनो आर में इस्तेमाल की हैं, वो हम
यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। ब्रेनोआर, जिसको कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये ब्रेनोआर इन द फॉर्म ऑफ सिरप, कैप्सूल्स, ग्रेन्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं और कई प्रकार का ब्रेनोआर है। आपके बच्चे के लिए कौन सा ब्रेनोआर आपको इस्तेमाल करना है, ये आप हमारे डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके इस चीज़ का फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद एक ब्रेनोआर चूज़ करना चाहते हैं बिना किसी डॉक्टर से सलाह किए हुए, तो ब्रेनोआर माइल्ड एक ऐसा ब्रेनोआर है जो बहुत ही ईज़िली यूज़ किया जा सकता है। ब्रेनोआर माइल्ड, ब्रेनोआर डीएस नहीं टीम, ब्रेनोआर माइल्ड जो ग्रीन कलर के अंदर आता है, ब्रेनोआर माइल्ड, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। अगर किसी कारण से आपका अभी तक कनेक्शन हमारे डॉक्टर के साथ नहीं हो पाया और आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को घटाना चाहते हैं, सेंसरी इश्यूज को डाउन लाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेनोआर माइल्ड के अंदर हमने ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल किया जो बहुत माइल्डली वर्क करती हैं। जटामांसी उनमें से एक है, तगर उनमें से एक है। ये ऐसी हर्ब्स हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं, हल्का सा भी साइड इफेक्ट नहीं देंगी और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे बहुत बढ़िया काम करेंगी आपके। सो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे अगर हम सीरियसली नहीं लेते हैं शुरू के अंदर, तो हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हम खास लाभ नहीं ले पाएंगे। हम में से बहुत से लोग मेरे समझाने के बावजूद भी थेरेपी सेंटर्स पे जब बच्चों को भेज देते हैं, खास तौर पे छोटे बच्चों को और ऐसे बच्चों को जो बच्चे अभी बहुत हाइपर एक्टिव हैं, तो एक्सेसिव कमांड्स के कारण वो हाइपर एक्टिविटी घटने की जगह बढ़ने लग जाती है। हमें ये खास ध्यान रखना है, हर बच्चा अलग है और हर बच्चे को डील करने का तरीका अलग है, हर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी का कारण अलग है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब अपने बच्चों की हाइपर एक्टिविटी के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हम डिस्कस करें, इंटरैक्ट करें। उनके छोटे-छोटे वीडियोस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर, जिसे कि हमारी टीम एनालाइज़ करके आगे आपको बता देगी कि क्या कारण है आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी का और वहाँ क्या किया जा सकता है। आपके क्वेश्चंस की तरफ मैं प्रोसीड करूँगा। The first question which I can see over here is from Ankur ji, and Ankur ji, you are discussing about Tanish, age is 13 years, and main concern is memory and study recording. Medicine started in September, and you are having some healing sessions with Meenu ji, and you are facing challenges related to memory. Surmukh is your coordinator. You are from Panipat, and if I talk about the medications, they have been mentioned over here for me. But as I can see over here, we met in September. October, November, December, January, February. We are in the ending of February now. So it becomes very important that we reanalyze the case either through a video conferencing one-on-one session or through a physical meet. At the age of 13 years, when you are following everything which we are guiding, it becomes very important to analyze what we have achieved and what should be the next plan of action, the next strategy. So I won't be guiding anything over here. I would be guiding something face to face through video conferencing or through a physical meet session, which is very important in this case. There are medicines which are there in front of me, but there are some further questions which can be asked when we are interacting one on one. And I would also like to understand over here that Meenu is doing the pranic healing for Tanishq. Along with that, there are some psychotherapeutic sessions which are required for Tanishq. Have we been doing that? They are also important, but all this can be discussed once we are meeting each other. And I would really like that before I leave India for the Dubai meets, it's very important that we connect and we do some action in this regards. Going further, the next question is from ID's Peaceful Progress and Harjot Singhal. Yeah, we met over there and there were certain things. It was for the first time that I met Harjot over there, and believe me, Harjot is far better a child than what I expected when I met him for the first time. The same was said by Dr. Shukla. The medications have been shared with me, Brenoir Hotsip DS 20 20 20 ml, and mild has been stopped.
I'll again be speaking out the instructions for Harjot. I don't know whether coordinator is summing it up in a proper way or not, but I do remember Harjot's case properly now. And that is the benefit when we meet face to face with each other. In case of Harjot, I told you that divide his phases in two parts. One, the aggressive phase, the other, the calmer phase. So you have already been shared two kinds of prescriptions separately for separate phases. Do follow those. Another thing which I mentioned to you over there was that we need at least 3 sessions per week for Harjot. The sessions which are going on with Meenu are the pranic healing sessions. I even allocated Ishan as one of the psychologists. I don't know whether that is being done. That is something which is really very important. At this age, Harjot needs a friend in Ishan. So please let me know if that is started or not as yet. That was one of the most important changes which I recommended. As far as potassium is concerned, share the entire blood test with me. Let my doctor discuss it with me. I would like to go through the entire blood works, and once I have gone through that, I would be guiding. I would even be checking if we need to be changing something, and give me some time. And Dr. Rajni, if you are over there, please note it down. You have to discuss Harjot's blood works with me. Moving further ahead, we have the details from Vasu for one of his patients where my son's verbal steaming isn't lowering down to do. On the other hand, he has improved eye contact, command following. And Rahul is the one who has done the sessions, and we started it in November, but unluckily it's only 7 sessions that have been completed till now. Now that is where the problem lies. For a child who is now at the age of 7.4 years, as important as the medicines are is the psychotherapy. We cannot expect the issues going away without the specified number of ABA sessions. So in case of Rishu, it's my request, 7 sessions are 2 less sessions for him. At least a weekly or a bi-weekly session is something which I recommend in a child at 7 years in age. With 7 sessions from November till February, we are nowhere. In these many sessions, it's hardly possible for a psychologist to analyze a child. So there are multiple changes which can be brought, but please do remember the psychotherapy sessions are really very important. So immediately go for a bi-weekly session. One of the psychologists can be a senior psychologist like Rahul, other one can be a psychologist who is senior but comparatively lesser priced in sessions. Let it be Nishtha or let it be Saurabh. Vasu, let Saurabh be the added psychologist for this child so that it's not very expensive for them. At the same time, they are getting what is required over there. So going further ahead, Mr. John Wick. Hello, Dr. Saab. Divyam doesn't sleep at night. We give 10 ml melatonin daily. He sleeps because him we are doesn't sleep. He's 9.4 years in age, and we have Brinoir Hot Sip DS 15 ml at night. We need to add Jatamansi oil at night, Ashima. You can note it for improving the sleep. And we need lavender oil massage at night. The sessions are going on. 16 have been done with Gurpriya and now taking with Rahul, completed total sessions. Ashima, you definitely are mentioning that the sessions are completed, but at 9.4 years of age, a minimum bi-weekly sessions are required. A weekly session, if we talk about that, we started in August. And did we meet this time around in case of Divyam over there in UK? I don't know, because if we started in August, we need to go for the second round of the second phase of treatment. Now, I don't know whether we met or not. If we have not met, then don't take my guidance in a group meet. We need to connect on a one-on-one video conferencing session where the entire case is analyzed. And then the required changes for the second phase of treatment are now done. See, I give consultations to my patients only once in 6 months. I'm not one of those doctors who need the patients to be coming to me again and again. We put a lot of effort
when we are consulting our parents. But what is required over there is for the parents to understand that the treatment is always done in phases of 6 months. I give the medicines, I fix the targets with my team, and then after 6 months, new targets, new connections, and new things. It is just like that when our child goes to study in a school, he starts from nursery. After nursery, he goes into KG. After KG to first, from first to second. Like this, the grades keep on changing. Even if the teacher of nursery is very good and the child has really enjoyed being in nursery, we do not let our child carry on with nursery again. He has to go to the next grade to get educated. Similarly, over here, even if you have got a very good response with our first 6 months of treatment, which is generally there in case of parents, please do not carry on with the same stuff. You need to be connecting again, preferably through a physical meet wherever it is possible. There is no comparison of a physical meet because Ayurveda says arog akrant shrirasya sthanani asto nirikshate nadi mutram malam jiva twag sparsh drigakriti. So it's a asht with checking of a examination of a parent which needs to be done. So that is something which is really very important for getting improvements. So if a physical meeting is possible, there is nothing beyond that. But if a physical meet is not possible because of my unavailability, there you definitely can go for a video conferencing. But if we are missing out on a physical meet, if we are missing out on a video conferencing, the results are bound to come down. And please do remember, you do not need to coordinate with your coordinators, doctors for getting in connection to me. Once the 6 months have crossed, you simply need to write it as a message that you need to be connected with me. The number is there on your screen so that you are then in the pool of patients who are to have a consultation. Because the day you decide it, it will take further 1 to 2 months for the turn to be there because of a number of patients in the waiting and because of our procedure where we analyze the entire case and it takes a lot of time in collecting, in analyzing and ensuring that nothing is left from the important facts. Going further ahead, we have over here uh, Rutika ji. Rutika ji have mentioned over here, hello sir, my doctor Gautami repeats whatever her friend speaks. Is it echolalia? Yeah, it is echolalia. And it's not that bad to be echolalic than being not able to speak anything up. So don't worry, gradually with the sessions, the echolalia will fade away. The fifth question which I can see over here, I missed it out, is सारस्ता रिस्टम के फायदे क्या हैं, एग्जैक्टली देते किस लिए हैं एंड मेरे पास ऑलरेडी ये हैं तो क्या मैं दे सकती हूँ? देखिए, अगर हाइपर एक्टिविटी नहीं है तो सारस्ता रिस्टम स्पीच को इम्प्रूव कर देता है, बट बिना बात के नहीं देना है, डिस्कस करके अपने डॉक्टर के साथ। अगर हाइपर एक्टिविटी नहीं है तो डेफिनेटली दिया जा सकता है। हरजोत हाइपर एक्टिव फेज has increased, so yeah, start with the hyperactive prescription and you will see around in 10 days of time that the hyperactivity will be going down. Don't worry, and the sessions are not to be stopped. So once again today we tried that majority of your questions are answered. Yes, there may be a few questions which might have been missed. My sincere apologies for that if any of your questions remained unanswered, but we tried. And as I just mentioned, we have to prioritize our members' questions. Every question is important to us. If you feel that your question was missed or you were not available in the live session, the number is there on your screen. Please copy and paste your question over there. And if you are watching our live after the live timings, again, you can write your question on the WhatsApp number, which is our helpline number, which is mentioned over there. Please prioritize our helpline numbers over your coordinators' numbers. It's convenient when you are directly messaging them, but it's tough to track. It's tough to provide you with quick help. Our wrist pushed mobile app is available on
what the Android apps also, as well as the iPhone also. So you can always download our mobile app for a better support from our team for you. And as always, your likes of our video, your shares of our video really matter a lot to us. So हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. Ayurvedic treatment rests on three powerful pillars: Daiva-Vyapashraya, Yukti-Vyapashraya, and Sattva-Vajaya. I try to combine all three of these approaches for the treatment of children suffering from autism. Sattva-Vajaya Chikitsa is a form of treatment that includes modern-day psychotherapy within it. Being a D.Litt scholar with PhD in role of Ayurvedic herbs in psychological disorders, as well as a dedicated researcher, it has been comparatively easier for me to apply Ayurvedic Sattva-Vajaya Chikitsa in integration with Yukti-Vyapashraya Chikitsa with greater precision and effectiveness. This combined approach has been consistently used by us in the management of children suffering from autism. In addition, selected aspects of Deva Vyapashraya Chikitsa have also been incorporated wherever appropriate. I would now like to present one case study to begin with. This is the case study of a 3-year-old child diagnosed with autism. At a very young age, Parth showed multiple developmental challenges. Chief complaints: speech delay, hyperactivity, irritative behavior, less interaction, poor understanding. Parth's detailed medical history was documented and evaluated before initiating treatment. In July 2023, Parth's parents consulted Dr. Navdeep Sharma and felt confident about the scope of treatment. Following the comprehensive assessment, Parth was recommended the medicine's prescription Braino R dose, 10 ml in afternoon, 20 ml at night. Braino R contains these Ayurvedic herbs: Mandukparni, Kushmand, Ashwagandha, Amlaki, Jatamansi, Sarpagandha, and Ustupurus. Braino A dose, 30 ml in the morning. Braino A contains these Ayurvedic herbs: Shankpushpi, Brahmi, Shatavari, Bringraj, Shunti, and Vacha. Pumpkin seeds oil dose, 8 drops in the morning, 8 drops in the evening. Contains Ayurvedic herb ingredient pumpkin seeds. Mukta Pishti dose, 125 milligrams in the morning, empty stomach. Contains marine pearls. At the initial assessments, Parth's hyperactivity was 3 out of 5. There was reduction in hyperactivity before second consultation with rating at 2 out of 5. कलर करो. वेरी गुड पार्ट. कलर करो. नो, इस हैंड से करते हैं, इस हैंड से. राइट हैंड. वेरी गुड. चलो कलर करो. At the start of treatment, Parth's speech was rated 1 out of 5. There was improvement before the second consultation, with the rating rising to 2 out of 5. बस. हो गया अबे Initially, command following was deficient with a rating of 1 out of 5. Prior to the second consultation, improvement was noted with a rating of 4 out of 5. वेरी गुड. खाओ. वेरी गुड. Initially, eye contact was rated 3 out of 5. Before the second consultation, his eye contact improved to a rating of 5 out of 5. उसका वीडियो बनाओ तो वो लड़का और भड़कता है एकदम से. पार्थ, खाना खा रहे हो? खाना खा रहे हो? हाँ? पार्थ, आपको क्या खाना है? क्या खाना है? At the beginning of treatment, Parth exhibited verbal stimming, visual sensory concerns, and hand flapping, with a rating of 4 out of 5. Prior to the second consultation, there was a reduction in his sensory concerns, with the rating dropping to 2 out of 5. Before second consultation, A through examination was done, where we evaluated the progress. Following is the medical comparative history of Parth. After 6 months, I added Saraswata Rishtam with gold, 5 milliliters morning after food. All previous medicines continued in the same doses. From July to January, a total of 20 ABA sessions were completed with psychologist Mr. Rahul. Before treatment, Parth often showed irritative behavior and did not respond clearly to instructions. करो. और बाहर बिलो करो. बाहर करो. बाहर करो. ऐसे करो. ऐसे. हाँ, बाहर. हाँ. चलो आ जाएगा वो. Within 9 months of undergoing treatment from Dr. Navdeep Sharma, Parth showed significant improvement. वेरी गुड. इसके अंदर रख दो. वेरी गुड. पापा का हैंड
दीदी का हैंड पकड़ो। वेरी गुड पार्थ, चलो। वेरी गुड, खाओ। वेरी गुड पार्थ, बहुत हेलो पेरेंट्स, पार्थ हेलो करो, हेलो करो। ये पार्थ मेरा बेटा 4 साल का होने वाला है। लास्ट ईयर जुलाई में हम डॉक्टर नवदीप शर्मा सर के यहाँ पहुंचे थे। हमें एक सर ने मेरे बताया था सर के बारे में। हमने सोचा भी नहीं था कि आज 9 महीने में पार्थ मम्मा पापा हमसे भूलेगा इतनी जल्दी। हम तो मतलब बड़ा एक माँ पेरेंट्स के लिए कहता है कि कब हम मम्मा पापा सुनेंगे पार्थ के मुंह से। आज पार्थ मम्मा पापा और विद सेंस सब कुछ बोलता है। भगवान की कृपा से और सर की मेडिसिन और सर के गाइडेंस से आज 9 महीने में पार्थ एक नियर टू नॉर्मल लाइफ जी रहा है। और स्कूल में भी पार्थ प्ले ग्रुप में था। अभी जस्ट 15 दिन पहले स्कूल में मैम ने बोला कि पार्थ को हम नर्सरी में भेजेंगे। और जो सर ने जो लाइफ में हमारी खुशियाँ दी हैं, बहुत एक पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि उसका बच्चा इतनी जल्दी और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए, एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी लाइफ में इतनी बड़ी खुशियाँ